સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું। સુરેન્દ્રનગરમાં શાળાઓ સીલ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી। શારદા ગીતા વિદ્યાલય સીલ થઈ। છેલ્લા 10 વર્ષથી વિદ્યાલય સ્કૂલ ચાલતું હતું। વિદ્યાલયને બાંધકામ પરમિશન વગર જ ચાલતું હતું। રિજનલ ફાયર વિભાગ અમદાવાદની ટીમે શાળાને સીલ માર્યું છે। પરમિશન પુરાવા રજૂ કરાયા તે પણ જૂઠા બતાવાયા છે। શાળામાં આવવાને જવા માટે એક જ પ્રવેશદ્વાર સીલ મારી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી। नरेंद्र कुमार राजीभाई भक्तिनगर सोसायटी वढवाण रेणा 80 फूट रोड पर आवेल श्री शारदा गीता विद्यालय में हूँ 50% भागीदार छूँ। अमे 2015 में बाजू में एक आदित्य कॉम्प्लेक्स आवेलू है एना उपरनु अमे धाबू लीधेलू जेमां 50% भागीदार हूँ छूँ अने 50% भागीदार पुनालाल दुधाभाई गौड़ है। त्यारबाद मारा भागीदारे पुनालाल दुधाभाई गौड़े एना पर अनधिकृत बांधकाम करी अने 2 माळनु बिल्डिंग बनावी नाखेलो जेमां पण मारी मंजूरी के सम्मति वगर आ शारदा गीता स्कूल ने बेसाडवानी शरूआत कर दीधी। अने सूरतनी अग्निकांडनी घटना जे 2019 में बनी त्यारबाद मैं विनंती करी के साहेब आ बाळकोनुं भविष्य जोखमाय छे माटे आपणे शाळाए बेसाडवी नथी छतां मारुं न मान्या तेथी मैं मुख्यमंत्रीश्रीने कलेक्टर साहेब ने मामलतदार साहेब ने एसपी साहेब ने शिक्षण विभाग में माध्यमिक में प्राथमिक में आम दरेक जगह अरजी करेल जेना अनुसंधाने